Welcome to the studio of NIOS. I am Anjali Bajpayee from Banaras Hindu University, and today we are going to talk about significance of environment on growth and development. Let us first begin what is growth. According to Hurlock, growth is change in size in proportion, disappearance of old features and acquisition of new. Crow and Crow states that growth refers to structural and physiological changes in an individual. And if we have to define development, then again according to Hurlock, we can say development means a progressive series of change that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. Anderson says development is concerned with growth as well as those changes in behavior which result from the environmental situation. So we can say growth and development are the influence of an individual's environment. For this, we have to see what is an environment of an individual. Environment refers to the living and non-living components of the natural world and to the interaction between them that supports life on earth. Interaction between living and non-living world and the life which happens on earth is a product of this interaction. The environment is a provider of goods and services and also recipients of waste product. We get lot of things from our environment and we also give back lot of things to our environment. We take oxygen from our environment and we give out carbon dioxide to our environment. And as a result, many times we are changing the constitution of our environment. Environment is basically consists of biotic components and non-living or abiotic components. The biotic components deal with the organisms like the plants, the animals, and the non-living or the abiotic components deals with the mud, the oxygen, the air which we have around us, the minerals which we have around us. If we have to define environment, then according to Ross, environment is the external force which influences us. Anastasi says that environment is everything that affects an individual except his genes. Therefore, we can say environment is responsible for growth and development of physical, mental and social traits in an individual. Our environment includes what we eat, that is the nutritional status, where we live, what type of house, what type of locale in which we are living, the medical care, whether we have proper immunization facilities, whether we have had proper medicines when we were sick, basic safety, whether we live in a neighborhood that is safe and sound, education, what we study and where we study. Our school has a lot of effect on our development, and our family support. The families, the children which grow in the joint families have better environment, they interact with others in a better way than the children who grow in the nuclear family because they have not interacted with many people. Aristotle argues that humans are not born with knowledge, but they acquire it through experience, and experience comes through environmental interaction. As it is said, when the individual is born, he has nothing with him. The tabula rasa theory, which was propounded by imperialists like Locke and Bacon in the 17th and 18th centuries, said that children when born are blank, but they learn from outside, from interaction by their environment. Over the past 100 years, the study of environmental influence on human growth and development has focused on influence of social and economic factors, family and household characteristics, urbanization and modernization, nutrition, and other features of the physical environment such as attitude, temperature, and climate, and all have found that these influence the growth and development of an individual. All components of human development are interwoven and are influenced by environment. The home, community, physical aspects, and school environments influence the way humans behave, think, engage with one another, grow, and process emotions. Nurturing environment contributes to positive health outcomes and fewer developmental changes, and adverse environment
contributes to adverse changes in the development. For example, when the circumstances like poverty are factored in, it is clear that its impact on environment poses a threat to individuals' growth and development. It's suggested that a nurturing environment can help promote healthy growth and development. Infants and children from low economic environment are often underweight and experience stunted growth. Poverty poses a developmental risk such that the impoverished environments poses threats to individuals' mind, body and spirit. Poverty also increases the likelihood of poor academic performance, physical health problems like malnutrition, obesity, high rate of depression, child abuse and physical injury. Under these conditions, children often underperform in school and many find it challenging to graduate from high school when they are older, which limits individual progression within the society. The growth of a child therefore depends upon the interaction of heredity and environment. If any is changed, then the growth and development of child changes. Now let us see the various types of environment for growth and development. We can divide this into different types. First of all, when the baby is conceived in the mother's womb, the prenatal environment is very important. Like we all know the story of Abhimanyu, that he heard about the Chakravyuh in his mother's womb and then he was able to carry out that breaking of Chakravyuh in the Mahabharata war. The chemical balances of the mother's body and the presence of condition or potential toxic substance can alter the development process of an individual. For an example, the mothers that use drugs or alcohol or have viral or bacterial disease or have direct traumatic injury during the pregnancy, this affects the development of the fetus. The fetus may not develop in the normal way. It may have certain defects which may occur during the birth. Next is the physical environment. After the child is born, he comes in contact with his surroundings. The air child breathes, the nutritional value of the food child eats, all influence his growth and development. For example, exposure to the conditions that lead to disease, accident or injury can influence the child's growth and development. They may cause stunted growth and accordingly the development may not happen. Certain cases of child abuse and neglect also inhibit growth and development in a normal way. Therefore, if the physical environment is nice, then the child development grows in a systematic and normal way. For this, when we consider the case of school, we should see that the schools are attractive, the buildings must have playground, there should be space to roam around freely, there should be adequate library facilities and equipment so that the child which grows in the school environment feels happy and grows accordingly. Next is the social or the cultural environment, which consists of the norms, values, belief systems and morals. The standards of behavior that regulate the child's life in the cultural group in which the child is raised influences his growth and development. As we say, much depends on the company one keeps. So, the child acquires many of social traits from his peers and therefore it is important to see if the peers are having good habit, then the child will automatically possess those good habits. Since the child learns a lot from his peers, therefore being in school fulfills his instinctive urges of self-assertion, gregariousness and combat. The child, if surrounded by good cultural environment, good family background and good social tradition, develops into a cultural citizen. The ample opportunity given to him to participate in social activities help him to unfold his talents and capacities. Next, the learning environment, the degree and type of stimulation available in the child's immediate environment, that is his classroom, his immediate learning environment, affects his growth and development. The sensory inputs promotes and shape cognitive development. If we give positive feedback, then the child develops those behaviors. If we give negative feedback, then those behaviors are
inhibited. Stimulation in adequate quantity and intensity promotes establishment of and shapes neural pathways in the brain. Therefore, schools should stimulate interest in the child about various learning activities. It should provide situations for self-analysis so that the child can analyze in himself and grow accordingly. Proper system of internal assessment and regularity in students should be encouraged, and the teacher should be considerate, trained and happy. All this will influence the child's development in a positive way. The emotional development. Emotional environment shapes the personality and affects the development of self-esteem, identity, trust, and the ability to enter into intimate relationships and personal resilience. The nature of a child's interpersonal relationship depends upon the degree of nurturance available to the child. School and family should inculcate adequate amount of self-control in the child so that he is able to control his emotional urges. When the impact of environment on growth and development is being considered, the approach of Yuri Bronfenbrenner has to be considered. He emphasized on 2 points in development. First, environmental contexts are important influence on a child's development, and the child is an active participant in initiating and responding to the developmental process. Bronfenbrenner sees this process as influenced by 4 overlapping ecological contexts, that is, the naturally occurring circumstances surrounding the living beings. Bronfenbrenner calls them as the microsystem, the mesosystem, the exosystem and the macrosystem. If we discuss each in detail, it is the microsystem. This is the context, which is the immediate setting in which the child or the young person lives, and the relationship among the people in this setting. Because of difference in people and relationship, microsystem vary widely and therefore cause development to vary among individual children. For example, for a preschooler, the microsystem may just include his immediate family, but for a teenager, the microsystem may include his family, his friends, his teachers and others. The next is the mesosystem. This concept is the array of setting and relationship setting that a person experiences as he or she grows up. A mesosystem is a set of microsystems. For example, as a preschooler gets older, the mesosystem expands into the classroom, the neighborhood as well as his home. Next is the exosystem. This concept is the array of settings that affect a child's development even though the child may not be directly experiencing these settings. For example, a parent's workplace may remain invisible to a developing child, but it affects the child indirectly by enhancing the socio-economic status of a parent. If the parent is happy in his workplace and is earning sufficiently, that will itself affect the child's growth at home because the environment at the home will be comfortable and more peaceful. The macrosystem. This concept is made up of the ideas, custom, installation of a society that influence a child development. That is, the belief of the society affects the individual's rearing practices. Like again, I give the example of girl rearing practices and the boy rearing practices in the Indian situation. In older times or previously, boys were giving more emphasis, their education was given more emphasis, girls were giving more emphasis to learn household chores. But now the things have changed and we see the effect that both boys and girls are performing equally well in all the sectors. So these concepts of development given by Bronfenbrenner affect whom the child gets to know and what they get to do as they grow up, because all his microsystem, mesosystem, exosystem and macrosystem directly affect his growth and development. Hence, we can say that what we are, how we react and how we perform can very well be influenced by where we live. Our environment has a direct implication of our personality, how we grow up as future citizens. What we have experienced in our life will
be the result of how we grow and how we develop. Our personality will be directly influenced by our surrounding. Thank you. चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं,
कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है। मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई। 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे। बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे
और मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नास पीटे, अरे तू चला जा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे ओ सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष, मनीष बेटे, तू इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।